friends and my beloved students. Today I'm going to show you two things. One, first time I'm coming with comment sections. I'm giving you some few questions because last 2-3 videos, those who have watched that, they know what we are doing, and those who are viewing minutely, they learned about the alkali metals and alkaline earth metals. That means group 1 and group 2. And today I'm going to show you group 13 elements. And before start going to discuss about the group 13 elements, first of all, I would like to show you or giving you some tasks so that on that basis what we have learned last few days by watching our video. Now, first questions I'm going to ask regarding the alkali metals or group 1 or group 2 elements. With respect to electron affinity, what statements applies to the halogens? I'm coming again. With respect to electron affinity, what statement applies to the halogens? Next questions. Where would you find the smallest atoms of elements in the periodic table? Again, where would you find the smallest atoms of elements in the periodic table? And third, probably, which of the following element groups are considered types of metals? Which of the following element groups are considered types of metals? Now my fourth question is, as you move from top to bottom down the periodic table, as you move from top to bottom down the periodic table, number one options, a change in atomic radius cannot be predicted. A change in atomic radius cannot be predicted. Number 2, atomic radius decreases. Number 2, atomic radius decreases. Number 3, electronegativity decreases. So you have to come in comment sections, write the answer properly. Now my next question is, as you move from left to right down the period on the periodic table, elements become dash. That is fill in the gaps. You have to fill up the gaps. As you move from left to right, from left to right in a periodic table, elements become dash. Number 6 questions. Mendeleev studied elements and looked for dash. Mendeleev studied elements and looked for dash. These 6 questions I have asked you, and I think those who have studied periodic table group 1 and group 2 in my videos, they are very much in a position to answer those questions. So give your answer on our comment section so that I can rectify it and give you the answer with the correct options also. Okay? So now come to the another part. Today I'm going to show you group 13, that is 3A, and I have divided the sections into 5 columns. Group 13, 3A, mnemonics, symbol, atomic number, and electronic configurations. Now first element is boron. There are 6 elements: boron, aluminium, gallium, indium, thallium, and nihonium. Okay, the first one is boron, and the mnemonics is, symbol is B. Now here I marking underline
in red color. That is boron, aluminium, gallium, indium, and thallium, and neonium. Bengan, alu, gazer, inthela. But I have not given any sort of mnemonics over here because this neonium not yet developed, not yet created, it is still proceedings. So only 1, 2, 3, 4, 5 are there. So Bengan, B, symbol is B, that is boron. Aluminium, alu, Al, that is aluminium. Gallium, gazer, Ga. Indium, In. So this is totally gone to here. Symbol In. Thallium, Thala, that is Tl. Okay, that is Tl. Now in neonium, this is not still exacted, and that's why it is still proceedings. So that's why mnemonics not here, though his atomic number is 113. Now as far as the group 13 is concerned, now in group 13 family, boron is typically a non-metal, right? Boron is typically non-metal but shows quality similar to aluminium, gallium, indium, and thallium. Boron, as I said, is a boron family. Group 13 is a boron family and is a typical non-metal. But aluminium, look here, aluminium is metallic. Boron is non-metallic, non-metal, right? It is not metal, it is non-metal, it is purely metallic, right? Metallic. Now, it shows qualities, and thallium is also a metallic character. All these 5 are in boron group, that is group 13, 3A. Now this block is known as P block. P block. Remember, this block is P block. Now here, if you notice these things, boron starts with atomic number 5 that has got high melting point. Aluminium 13 atomic number, which has got electronic configuration 283. Gallium, Ga symbol 31 atomic number, which has got electronic configuration 28183. Now come to the indium. 49 is an atomic number 28183. The last one is thallium. Thallium is an heavy metal, heavy element, 81 atomic number, electronic configuration 28132 Now all these belong to the same element, means boron family. Now here the valence is 3 in outermost shell, 3. There is a similarity, right? There is a similarity. Now, group 3, the electron configurations, occurrence, and its physical properties and chemical properties. Now, when we consider about the electronic configurations and the valence, now here the reductance, as reductance, if we consider the group 13 elements compared to group 2 and group 1 is less powerful than the alkali metals and alkaline earth metals. Although boron is relatively rare, aluminium is abundant,
and gallium is approximately 5,000 to 10,000 times less abundant than aluminium, and due to its low melting point and high boiling point, gallium is used as a liquid in thermometer. That means what? Due to its low melting point and highly boiling point, gallium is used as a liquid in thermometer. Now when we consider about the means low melting point and sorry, high boiling point, now compared to from top to bottom, again the atomic radius increases. First one is 2, second one is 3, fourth one is 4 shells, fifth one is 5th shell. Similarly, it goes to 7, like this. Now, on moving down the group, when we call as properties, periodic properties, now first question arises, atomic radii. Now, first one on moving down the group, when we say moving down the group, for each element, like boron to aluminium, aluminium to gallium, gallium to indium, thallium. Now, when we moving down the group, for each successive element, one extra shell of electrons is added, and hence atomic radius is expected to increase. मतलब क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे तक जाते हैं तो एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहा है. देखो, 2 था, एक ऐड हो रहा है, 3 से और एक ऐड हो रहा है, 4 से और एक ऐड हो रहा है, 5 से फिर एक ऐड हो रहा है, 6 से 7, इस तरह से. बट इधर एक डेविएशन हो रहा है. डेविएशन मतलब फर्क आ रहा है. The atomic radius of gallium is less than aluminium. Okay, the atomic radius of gallium is less than aluminium. अब वो कैसे? अगर pm पिकोमीटर को पकड़े तो एल्युमिनियम का है 1 pm 143 pm compared to 135 pm picometer. अगर पकड़ते हैं तो एटॉमिक रेडी के बारे में जब हम बोलते हैं तो अगर फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एज फार एज पिकोमीटर इज कंसर्न इधर 143 हो रहा है या पिकोमीटर, while that of gallium जो है वो 135 picometer atomic weight. तो this is because of variation हो रहा in the inner core of the electronic configuration. जब हम इधर के अंदरूनी बात, सब शेल की बात आता है, शेल नहीं सब शेल, इसके अंदर सब शेल की बात आता है, तब इधर पे थोड़ा वेरिएशन हो जाता है. इस कारण ये वाला जो है 143 pm कंपेयर टू 135 pm वो घट जाता है एटॉमिक रेडी कंपेयर टू गैलियम. एल्युमिनियम इज हाई. तो ये इसका वेरिएशन डिपेंड करता है, निर्भर करता है. डोंट फॉरगेट एंड डोंट बी कंफ्यूज्ड, क्योंकि अगर एटॉमिक रेडियस बोला तो वो अलग है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और एटॉमिक रेडी बोलता है पिकोमीटर के हिसाब से तो गैलियम इज लेस देन द एल्युमिनियम. ये क्वेश्चंस आ सकता है. तीसरा, जो बोरॉन हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, इसमें अगर बोला जाए एटॉमिक रेडी के हिसाब से, पिकोमीटर के हिसाब से कौन सा सबसे, इस 1 2 3 4 5 इसको छोड़ के ये 5 जो एलिमेंट है इसमें एटॉमिक रेडियस सबसे लिस्ट कौन सा है? That is smallest atomic radius, that is 88 picometer. तो ये सबसे लिस्ट है बोरॉन pm, राइट? तो ये सबसे लिस्ट होगा.
एंड अगर एटॉमिक रेडियस की बात आता है तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स, अभी जो हम पढ़ा रहे ग्रुप 13 एलिमेंट्स बोरोन फैमिली पी ब्लॉक का, उसमें अगर पकड़ते हैं तो लोअर एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स जो है are lower than that of the alkaline earth metals of group 2, primarily due to the alkaline earth elements have a greater nuclear charge of group 3 elements. ठीक है, तो एटॉमिक रेडी ग्रुप 13 का जो एटॉमिक रेडी वो लोअर देन दैट ऑफ जो ग्रुप 2 में हमने पढ़ाए थे, ग्रुप 2 मतलब एल्कालाइन अर्थ मेटल्स, राइट। अब आ रहे हैं आयोनाइजेशंस एंथैल्पी, दैट इज दोज हु आर इन क्लास 11 and 11 and 12, they knows delta H or IE, right? That is आयोनाइजेशंस एंथैल्पी। 11-12 के लिए ये महत्वपूर्ण है, वो लोग समझेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है। ये 9-10 के लिए नहीं, क्लास 11 और 12 के लिए डेल्टा H, कैपिटल H और कैपिटल IE, ये जो आयोनाइजेशंस एंथैल्पी बोला जाता है, ऑल्सो शो एन इरेगुलर ट्रेंड। इरेगुलर ट्रेंड मतलब बोरोन से एल्युमिनियम की तरफ जाओगे तो देयर इज अ मार्जिनल डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आयोनाइजेशंस एंथैल्पी डिक्रीजेस बट फ्रॉम Al, मतलब ये सिंबल से अगर Tl तक जाए तो देयर इज ओनली अ मार्जिनल डिफरेंस, ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी में मार्जिनल डिफरेंस है। Ionization energy, ionization's enthalpy, marginal difference, marginal difference for class 11 स्टूडेंट के लिए ये है marginal difference from aluminum to thallium, Tl तक जाए तो ionization's enthalpy marginal difference. okay, अगर हम लास्ट एलिमेंट को पकड़ें तो लास्ट एलिमेंट है थैलियम, थैलियम Tl। अगर न्यूमेरिक्स के हिसाब से पकड़ें तो बैगन आलू गाजर इन थैला, तो Tl, तो Tl के हिसाब से अगर पकड़ते हैं तो लास्ट एलिमेंट जो है दैट इज थैलियम। थैलियम में 10d इलेक्ट्रॉन्स हैं in Tl, means Tl has got 10d elements, right? लेकिन हम लोग कौन सा पकड़ रहे हैं, हम लोग कौन सा ब्लॉक में चाह रहे हैं, P ब्लॉक, लेकिन इधर से शुरू हो जा रहा है 10d elements 10d, sorry, that is इलेक्ट्रॉन्स, नॉट एलिमेंट्स। P ब्लॉक में है तो इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो 10d इलेक्ट्रॉन्स जब भी हम बोलते हैं एंड 14f इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके मतलब है 10d इलेक्ट्रॉन्स एंड 14f। तो हम लोग जानते हैं कि s p d f ये ब्लॉक है। अभी तक आपने सीखा है इस ब्लॉक को अच्छी तरह, राइट। अब नया जो ब्लॉक आ रहा है P ब्लॉक, लेकिन ये जो थैलियम है, थैलियम that is Tl symbol has got 10d electrons and 14f, right, electrons in its 14f electrons in its inner
inner electronic configuration, right? तो इसका मतलब हुआ इधर से शुरू होता है, पी ब्लॉक से ही शुरू हो जाता है डी एंड एफ ब्लॉक, जो कि हेलियम के बारे में कहा गया है। इसका जो एटॉमिक नंबर है 81, इधर से शुरू हो जाता है sp-df, right? Subshells, inner electronic configuration. I'm not talking about the electronic configurations, I'm talking about the inner electronic configuration, very helpful for those who are in class 11 and 12. इधर से शुरू हो जाता है। Now I'm coming to electron negativity, electronegativity। जब भी हम एटॉमिक रेडी के बारे में बात करते हैं और उसके बाद आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, उसके बाद आता है जो प्रॉपर्टी आता है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ग्रुप के हिसाब से जाते हैं, हम पहले बोलते हैं ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम, तो उसके हिसाब से अगर जाते हैं तो फर्स्ट फ्रॉम बी टू एल मतलब बोरोन से एल्युमिनियम अगर जाते हैं तो एटॉमिक या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस फ्रॉम बोरोन to aluminum, right? And then increases marginally, फिर गैलियम, इंडियम एंड थैलियम से इधर से फिर marginally increase करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increase कर रहा है? जैसे बोरोन से, बिकॉज इधर तुम अच्छी तरह से देखो, अगर बोरोन से गैलियम की तरफ जाओगे तो पहले ही बोला था एटॉमिक रेडी इधर डिफर करता मार्जिनली, लेकिन इधर बहुत फर्क आता है। इधर एल्युमिनियम 143 pm तो गैलियम 135 pm। अगर डाउन द ग्रुप में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, बट एटॉमिक रेडी इधर फॉल करता है, गैलियम नॉट डिक्रीज कर रहा है लेकिन एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है शेल के हिसाब से। तो इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है और डिस्क्रिपेंसीज जो इधर है इन द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट, और एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट के हिसाब से अगर जाते हैं तो मार्जिनली बोरोन टू एल्युमिनियम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज मार्जिनली डिक्रीज कर रहा है, राइट? लेकिन एल्युमिनियम के बाद गैलियम, इंडियम एंड थैलियम इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है मार्जिनली। अगर इधर से देखो बोरोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज 2 और एल्युमिनियम में जाओ 1.5, आप नीचे की तरफ आओ इधर से शुरू हो जाता है मार्जिनली इंक्रीज। अब देख रहे हो 0.1 करके इधर इंक्रीज कर रहा है, तो दिस इज इंक्रीजिंग पैटर्न, राइट? और इधर के ऊपर जाए तो दैट इज डिक्रीजिंग कर रहा है। तो नेचुरली बोरोन मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन एल्युमिनियम, लेकिन एल्युमिनियम के बाद से अगर गैलियम जाओ, इंडियम जाओ, थैलियम जाओ तो मार्जिनली इंक्रीज कर रहा है। सो electronegativity here also become variety as far as the atomic radius is concerned, as far as the PM is concerned। इधर भी जैसे डिफरेंस है इसमें भी डिफरेंस है। As I said, boron is lord metal and abundant use of aluminium, ये ऑक्साइड के हिसाब से भी आता है और ये abundant है, it is a metallic, okay। लेकिन गैलियम, इंडियम एंड थैलियम as I said young, so these are rare totally compared to aluminium, okay। next one, अब इसको अगर बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर आते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है। ग्रुप 13 एलिमेंट्स में अगर देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स में हम लोग को मिलता है आटोमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर देखें तो देखते हैं कि N(P1) इस तरह का हिसाब आ रहा है। तो अगर NS2 NP1 इस हिसाब से अगर चलते हैं
तो हम लोग को पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से क्या आ रहा है। मैंने पहले ही बोला था एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और एल्किल में किस तरह से NS1 काम करता है। तो जिसके इसके पास नोटबुक है, जो कैलकुलेशंस चाहते हो, तो इस फॉर्मूले से आप पी ब्लॉक शेल का, पी ब्लॉक मींस ग्रुप 13 को अच्छी तरह से आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है, एटॉमिक नंबर है, आप कैलकुलेशन निकाल के हमें कमेंट्स बॉक्स में भेजिए किस तरह से आप इसको पी ब्लॉक को किस तरह से इस फॉर्मूले के तहत आप इसको इनर कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप इसको बता सकते हैं। तो आई एम वेटिंग फॉर योर इलेक्ट्रॉनिक दिस कमेंट्स आल्सो, किस तरह से NS2 NP1 आप कर सकते हो। तो अगर NP1 electron takes part in bonding, the oxidation state is +1, and if all the three electrons, that is NS NP, that means NS and NP take part in bonding, the oxidation state is +3. तो NS and NP अगर ये दोनों एक साथ काम करना चाहे तो इसका +3 ऑक्साइडेशन स्टेट, ऑक्साइडेशन स्टेट। एज आई सेड, ये तीन ले नहीं सकता है कोई भी, तो इसमें आपको इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस काम करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रुप 13 का सिमिलरिटी और किससे किससे, क्योंकि एल्कालाइन अर्थ मेटल्स हमने बोला था, और एल्कालाइन मेटल्स दैट इज very very powerful metallic, but is compared to that alkaline earth metals or alkali metals, it is low metallic, मैंने पहले ही बोल दिया था। अच्छा, इसके बाद तुम्हारे पास आता है जो कि आप लोग 11-12 में करते हो, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का। तो वो है, आपको जानना होगा ये जो डिफरेंस है तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में किस तरह से इफेक्ट होता है। इन ग्रुप 13 दैट इज बोरॉन फैमिली में पी ब्लॉक, उसमें बोरॉन फैमिली में देखा गया बोरॉन इज ए नॉन मेटेलिक एज आई सेड इन नेचर, और ये एक्सट्रीमली हार्ड और ब्लैक कलर का होता है, सॉलिड। तो इसका वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, as I mentioned over here, ये very high melting point because it is solid in nature। और rest of the जो element है, मतलब एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये जो rest of the element है ये soft metal है, ये hard metal है और ये soft metal है। और ये soft metal इसका melting point है जो कि बोरॉन से काफी लो है, काफी लो है। तो low melting and high इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इसका मतलब है हाई मेल्टिंग पॉइंट और ये है लो मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन हाई इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरिटी। तो इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरिटी जब भी बोला गया मतलब कंडक्टिविटी, तो गैलियम एल्यूमिनियम के बाद आता है, गैलियम हैज एन अनयूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट, कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट ड्यूरिंग समर, और इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब जो है मेक्स इट्स यूजफुल मटेरियल फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर। तो गैलियम का अपना प्रॉपर्टीज है लो बट हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट लेकिन हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और लो मेल्टिंग पॉइंट अगर हो जाता है तो लिक्विड स्टेट ड्यूरिंग समर में हो जाता है। ठीक है, तो ये था आज का जो रिएक्टिविटी। तो इसका जो प्रॉपर्टी केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये थोड़ा हटके है
ग्रुप 13 एलिमेंट, पी ब्लॉक स्टार्ट हो गया, तो ग्रुप 13 एलिमेंट बोरॉन फैमिली, तो ये बोरॉन फैमिली का जो एटमॉस्फेरिक जो केमिकल प्रॉपर्टीज और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हमने बोल दिया है। आपको सिर्फ ये करना होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पी ब्लॉक का है, तो नेचुरली sp में किस तरह से spdf, क्योंकि मैंने थेरियम का बोल ही दिया है, इस कॉल has got 10d electrons, okay, and 14f electrons in its inner electronic configuration। तो आपको बताना है इसको आप किस तरह से inner electronic configurations करोगे through NSNP, मतलब NS2 NP1 से। ये एकदम अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि अब शुरू हो जा रहा है SPDF ब्लॉक, धीरे धीरे आपके सामने आएगा। और नेचुरली मैं चाहता हूं कि आज के जो क्वेश्चंस आपको दिया गया है वो क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, और मैं आशा करता हूं उसका जो आंसर है, एप्रोप्रिएट आंसर, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको कमेंट सेक्शन में SF साइंस विद क्रिस सर भेजेगा। और आपको एक खुशखबरी दे रहा हूं, हमारा नया पेज, फेसबुक पेज आया है, वो उसका नाम है SF साइंस विद क्रिस सर। तो अवश्य फेसबुक को देखिए, फेसबुक पेज, और जानने की कोशिश कीजिए। और आपका कमेंट्स, योर कमेंट्स and your subscriptions give us the ample energy so that I can furthermore extend my knowledge and share my knowledge with you, so that in future those who are not memorizing this periodic table, or those who are not reluctant with chemistry, they might go for the serious with this periodic table. First, to understand the periodic table minutely, what is melting point and boiling point, how it affects the periodical element, means periodic table elements. So next class or next video, I am thinking that I am just getting the comment sections from your side, getting the answer appropriately, so that I can give you furthermore questions, so that you can get the total conclusions of the periodic table, right? So I think this video will help you. Thank you.